Hello, good afternoon. In the last lecture, we are discussing about the modern guidance law. In that, we are discussing the modern guidance scheme. We have solved the numerical based on that. So today we'll discuss about the kinematic equation of missile guidance system. That is the remaining part of the unit and numerical based on that. Am I audible to you? Yes. Okay, fine. So we'll start with the kinematic equation. What is kinematic equation? First of all, so we need to apply some equation of motion as your missile and the target both are generally in the motion. So we need to apply the kinematic equation of motion to get the required vertical latex signal so that your missile can be directed towards the target or in the line of sight. So what are the target? What are the hmm. So as you know that what are the prerequisite or what are the information you require before and after the launch that you require to have target location and target velocity and target acceleration information that are can be given using electrical signals that are head aim and English bias. Head aim is the point the missile head at the target, and the English bias is the point the missile to the intercept point. Means when you are not engaging in the pure pursuit, we need to intercept the missile at some predefined location that will be known as the bias. Now, apart from this, we need to apply some signals additionally to the autopilot system that are the kinematic equations, and we can derive this equation using the point mass model of the missile and the target for given guidance system. Here it is important that based on guidance system, we can apply point mass system or point mass balance to the uh, target and missile, and we can get the kinematic equation from where we get the required latex signal to missile. So based on this, will take one reference diagram. So here is one missile target engagement geometry is given. Like this kind of numerical we already solved. So here there is one missile is given represented by a point mass system. Target is also represented by point mass system. There is a reference line or the head of the missile. The angle between the line of sight and the reference side is theta. Similarly, angle between what is here is velocity vector of missile is at alpha. सर सर आपका AM and angle is the 90 degree from the velocity vector. सर Velocity. सर आवाज काफी सर कम your है। voice is not clear. सर का Yeah. सर आप Okay. Hello. I think it's सर आपका आवाज बहुत कम है सर मैग्नीट्यूड बहुत कम है सर। सर ईयरफोन्स पहनो wait. Yeah, hello. Am I audible now? अभी आ रहा है यस Hello. हाँ सर आवाज आ रहा है Hello. Yes, sir, you're audible. सर यहाँ Setting Yes, sir, is you're not audible. changing. Wait.
Hello, am I audible now? Hello. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. So Yes, what sir, we are you are audible. okay, fine. So here we'll have taken one missile target engagement and the trajectory or geometry. Based on that, we are discussing the kinematic equations. So what you require to find out here is using the kinematic equation, we want to find out the latex signal required to apply to the autopilot system of the missile. Here R is the range between target and missile. That is nothing but LOS. We want to find out the rate of change of LOS and the angular rate of change of or the rate of change of theta. So here using the geometry, using this geometry, we can find out the rate of change of LOS is equal to Vt cos beta minus theta minus Vm cos alpha minus theta. What is here? The rate of change of LOS is nothing but the closing velocity, right? The LOS is decreasing means your target is coming near to the missile. So it will be termed as the negative of closing velocity here. So it will be your the velocity in the direction or velocity component in the direction of LOS and the velocity of missile and that component of missile velocity in the direction of LOS. So if you resolve the velocity component Vm and Vt in the direction of LOS, we will get the R dot, that is your rate of LOS or negative of the closing velocity. So this how you got Vt into cos beta minus theta. That is from here Vt is the target velocity and the x direction or cos component of the beta minus theta. Theta is the angle between the reference line and the line of sight. Similarly minus Vm into cos alpha minus theta. So that will give you the rate of change of LOS or R dot. And now if you want to find out the rate of change of theta or angular rate of change of LOS, that can be find out using the, if you differentiate equation 1 with respect to d theta by dt, means instead of R, if you multiply with theta and if take d theta by dt, d theta by dt, so it will become R into d theta by dt is equal to Vt. Cos will become sine beta minus theta minus Vm sine alpha minus theta. So that will become your angular change of LOS or theta dot. Now theta dot is the LOS rate and R dot is rate of change of LOS separation or rate of change of LOS. So these are the two equations we get, or these are the two generalized equations we will get for given geometry or given missile and target engagement, from where R dot is the rate of change of line of sight and theta dot is line of sight rate. Now we know that VC is the closing velocity is equal to negative of R dot because both are coming toward each other. That is why negative sign is taken. So here closing velocity will become Vm cos alpha minus theta minus Vt cos beta minus theta. So that is nothing but simply the
velocity component of missile and the target in the direction of line of sight, and the theta dot can be found out using the range equation and the velocity components towards the direction. These are not the exact equation or the complete equation of the kinematic or complete kinematic equation of the engagement, but two generalized equation we are using for the derivation. Here also, if you can see, Vt, Vm, beta, theta, all are variables with respect to time. So if for the complete equation, we need to integrate this equation with respect to time for the variation of velocities and the angles. Then you will get the complete set of equation for the missile and target engagement. So that will take an example of a simple pure pursuit, and we'll see how the equations are derived. Is it clear? Okay, so based on this equation, we'll go to one numerical. There is one missile target engagement geometry is given. We want to find out the closing velocity, the r dot, LOS rate, and the time to go. Now, closing velocity, we have the formula here, that is Vm cos alpha minus theta minus Vt cos beta minus theta. Here Vm is 550 meter per second into cos alpha is 60 minus 15 minus Vt is 400 meter per second. Here the beta is 150 minus 15. So that will give you the closing velocity. The negative of closing velocity will give you r dot, or simply you can put the values in this equation number 1 to get r dot. Then we want to find out LOS rate, that is here theta dot will be your LOS rate. R is given, so we can find out the LOS rate. Vt is given, beta and alpha is also given. Then we want to find out time to go or estimated time to go. We have the formula. What is time to go? R divided by closing velocity. So R is given 15. Then the closing velocity, if you calculate, that will become your time to go. Now find out these four values, then we'll discuss the remaining two questions. So these are the questions asked based on the kinematic equation. The two general kinematic equation required to find out the latex signal. Now again, for latex signal, we require to know which kind of guidance law we are using, and based on the guidance law, we will apply or we will integrate this equation to come across the required latex signal. That's what we have discussed in the modern guidance law. Here for the these parameters, we don't require to know the guidance law. We want to only require the geometry of the missile and target using point mass balance model. So find out these four questions and we'll see what are the next two questions. Find out what is your closing velocity. It will become your 550 into cos 60 minus 15 minus 400 cos 150 minus 15. So that will become your closing velocity. Similarly, find out r dot, LOS rate, and time to go. Calculate quickly. Calculate quickly. You won't get the solution for this in any book, so we require to calculate here so that you can add it in your notes and it will be useful for during the examinations. Find out the answer and unmute your mic. Tell me the answer. What is the closing velocity you are getting? 106 meter per second. 106 meter per second. Find out r dot. Formula is given here. Correct, sir. What is r dot? It will be negative of closing velocity simply. Minus 90.
I'm saying I'm not sure about the answer. So I'm asking it correct. Your voice is not audible. I'm not sure about the answer. Is it correct? Okay, remaining people will be solving, right? The formula is given here. First, R dot formula is Vt cos beta minus theta minus Vm cos alpha minus theta. Simply you need to put the value, you'll get R dot, and closing velocity is minus of R dot. So here R dot will be your minus 90 and Vc will be your 90 meter per second, I think approximately, if everybody getting the same answer. Then we need to find out LOS rate. Formula is given here, 1 by R Vt sine beta minus theta minus Vm sine alpha minus theta. All the data is given, so you can quickly find out LOS rate. Then time to go. Find out LOS rate. Remaining students, what are you doing? Hurry up, solve this question so we can move forward. We need to take example of pure pursuit and we need to derive equations for that pure pursuit. Find out सर LOS. क्लोजिंग वेलोसिटी का आंसर क्या है? किसी को 90 मिला, आपको कितना आया? कितना सर? 90 आया किसी को, आपको कितना आया? 671. कितना? 671. जितना वेरिएशन कैसे आ रहा है देखो एक बार. So what will be सर formula क्या for closing? उसका फॉर्मूला क्या है? Vm cos of alpha minus theta, right? See, this is direct formula, right? That R dot is equal to Vt cos beta minus theta minus Vm cos सर फॉर्मूला alpha. में छोड़ो सर, हाँ. कॉन्सेप्ट लगाओ ना उधर, इसमें जाओ. Constant भी concept. एग्जैक्टली खुद ही आ जाएगा. Concept दोनों विषय में फिगर आएगा. देख के दिख जाएगा. सर हाँ. 550 cos 45 Okay. माइनस 400 हाँ, right. cos 45. Cos 45 कैसे आएगा 400? सर वो 50 है, वो 50 है, नीचे उसका का वो 30 है, नीचे का 15 है. 30 प्लस 15 45. सर 30 प्लस नहीं ये 150 है ना. Vt आपका मेरा 150 है. 106 है. तो उधर का 30 है ना, तो वो आएगा 30 हो गया. ये एंगल और आपका नीचे का 15 15 है. है. सर 180 माइनस हाँ, 150 अरे सर वो 50 हो छोटा गया वाला प्लस एंगल, 15 डिग्री. बड़ा See वाला here. एंगल 30. अरे ब्रो This is एक your. मिनट Okay, बताओ. एक मिनट सर एनोटेशन ऑन कर सकते हैं, वो उसमें हो सर जाएगा. एनोटेशन ऑन करो ना, एक सेकंड. क्या? एनोटेशन ऑन करो उससे ना, फिर हम क्लियरली लिख दिख सकते हैं, जाएगा. लिख सकते हैं हम इसको. अच्छा हाँ. मतलब यहाँ आप बना के दिखा देंगे. ओके. और यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है उसका एडिट करने का. शायद वो लॉक किया हुआ है, अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे. इसमें मैं लिख नहीं सर सकता. ये आपको जो भी है ना सर, ये जो VT है 180 डिग्री. वेट. आदित्य तो माइक ऑफ कर, आवाज आती है. फिर मेरे को 106 है. हाँ 106 ही है. 16.065. 106 है ना. Okay, we'll go by the formula. See, first find out R dot. Yes sir. What is R dot? It will be Vt. Vt is equal to 400 into cos beta minus theta. What is your beta? 150 minus Right. theta will become 15. Right. So 150 minus 15 कितना आएगा? 120. Then so it will become your R dot. Now Vc will become minus of R dot. So first of all find out R dot कितना मिला? See, we need to go by this what you call reference geometry. The beta is the angle between your reference and the velocity vector of the target, and the theta is the angle between your reference and the LOS. Similarly here, the LOS will be going in the direction, it will be same 15,
So 150 minus 15 will become 120. So what will be answer here? 400 into cos Sir, 120 minus 500 into 35 na? 45 cos 45. Yes. 150 minus 15, 135. हाँ 115 minus 135. 150 that is minus one 15. that is 135. So 135. yeah. Sir, So what एक will be second. the 15 15 so minus we'll get it 150. 15 minus 150. 150 minus 15 bro. बीटा One and माइनस the थीटा same. लिखा है, Cos बीटा तो माइनस one थीटा है। so what is the अरे answer cos now? है, doesn't matter. Cos है. What is the answer now? 1 second. R डॉट कितना है आपको? R डॉट आएगा 400 into cos 135 minus 550 cos 45. सर Simply माइनस 671 कैसे आ सकता है? minus वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो माइनस 671 आता है। ठीक है जो भी आता है ना तो क्योंकि आपका वेलोसिटी का जो क्या टारगेट वेलोसिटी गोइंग प्रैक्टिकली है इम्पॉसिबल है। क्यों माइनस आएगा, माइनस ही आएगा ब्रो, माइनस ही आएगा आ रहा है इसलिए। हम R डॉट की बात करें तो माइनस आएगा ना वो सर मतलब 671 माइनस माइनस हटा देंगे। सर 550 cos 45 माइनस नहीं वो प्लस है। गोइंग बाय दिस फॉर्मूला सर व्हाट इज द 550 cos आंसर? 45 minus 400 cos 135 right? यस दैट इज फॉर क्लोजिंग वेलोसिटी। सर 671 कैसे पॉसिबल? पॉसिबल आएगा क्या जो टारगेट है वो गोइंग अवे सो टारगेट का वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहा है तो आपका मिसाइल वेलोसिटी शुड बी मोर क्लोजिंग वेलोसिटी ज्यादा अगर सामने आ रहा है तो दोनों का वेलोसिटी कंबाइन होगा ना। अगर यहाँ पे इसका देखो वेलोसिटी आपका वेक्टर कहाँ पे है दोनों का टुवर्ड्स ईच अदर है तो दोनों का कंबाइन वेलोसिटी होकर क्लोजिंग वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे देखोगे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ टारगेट इज अवे फ्रॉम यहाँ पे टारगेट का वेलोसिटी वेक्टर अवे है तो यहाँ पे vm माइनस vt आएगा तो यहाँ पे क्लोजिंग वेलोसिटी कम आएगा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साइड आ रहे हैं ना देखो आई थिंक इसमें ऐड करना पड़ेगा। हाँ vt और हाँ vm मे दोनों बी में सर एक सेकंड सर एक सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी आपको देखना पड़ेगा ना और कुछ नहीं है। एक सेकंड सर। इसमें cos सर इसमें cos यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो आंसर आ सर जाएगा। सर सर फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। हम लोग बोलो जब इसको सॉल्व करते हैं ना हाँ मैथमेटिकली ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हाँ तो सेम तो ट्रिग्नोमेट्री यूज माइनस का करके आपको फॉर्मूला आया और माइनस कुछ ही नहीं है। ऑफ माइनस होगा तो दोनों को ऐड करना है 671 आंसर। हाँ और फाइंड आउट एलओएस रेट तो आपको थीटा डॉट फाइंड करना है। थीटा डॉट फाइंड आउट करो। So it is 1 by r into vt sin beta minus theta minus vm sin alpha minus theta. R is 15. So 1 by 15 into vt is equal to 400 sin 135 minus 550 sin 45. That will become your theta dot. That will is your LOS rate. Find out LOS rate. सर वो थीटा डॉट का वो इक्वेशन कैसे आया? थीटा डॉट इक्वेशन आया आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको वेलोसिटी अपने डी थीटा बाई डी टी से अपने वो किया है मतलब जो भी है वी टी कोस बीटा माइनस थीटा माइनस वी एम कोस अल्फा माइनस थीटा दिस आर योर कोऑर्डिनेट्स है ना वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स द एलओएस। सो आपने थीटा डॉट फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन को डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई किया और मतलब इसको आपने विथ थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपने डिफरेंशिएट किया है। सो को डी थीटा बाई डी टी आया। यहाँ पे ऑलरेडी रेंज था सो रेंज आपने इधर आ गया तो इट विल बिकम थीटा डॉट आर इज इक्वल टू वी टी साइन बीटा माइनस थीटा। सो वो आर ने आपने राइट हैंड साइड में ले लिया इसलिए 1 बाई आर आया। ये आपका जो पहला वाला इक्वेशन है जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसको आपने डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। दैट विल बिकम योर डी थीटा नो सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू टी लेकिन आपको थीटा को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी थीटा बाई डी टी। सो बोथ साइड डी थीटा बाई डी टी आएगा तो आपका ये इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा बाई डी टी। आर आपका कांस्टेंट है वो आर डॉट क्या है डी आर बाई डी टी है तो वो आज हो जाएगा रेंज सिंपली आर।
तो यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू वी टी कोस बीटा ये कोस बीटा माइनस थीटा है वो हो जाएगा साइन बीटा माइनस थीटा एंड आपका जो कोस अल्फा माइनस थीटा है हो जाएगा साइन अल्फा माइनस थीटा. Sir, R dot is itself rate of change of LOS. That is your rate of change of LOS और closing velocity है right, और minus of closing velocity. तो आप बोल रहे हो multiply both side by d theta by dt. जो आपको यहाँ पे आपको जो भी वेलोसिटी वेक्टर है टूवर्ड्स LOS वो वेलोसिटी वेक्टर को हमें डिफरेंशिएट करना है. वो मैं समझ गया dr by dt है, ठीक है. हाँ हाँ dr by dt है और अपना थीटा क्या है? थीटा इज एंगल ना, एंगल. हाँ आपको एंगुलर LOS भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. आप क्लोजिंग वेलोसिटी मिल गया, आप ये एंगुलर कितना LOS चेंज हो रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आपको डी थीटा बाई डी टी करना पड़ेगा. दोनों साइड डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तब डिफ्रेंशिएशन होगा ना. तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा बाई डी टी से, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा बाई डी टी से. तो यहाँ पे थीटा ऑलरेडी है तो वो पूरा इक्वेशन आपका डिफरेंशिएट होके आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा. सर ये लॉस LOS रेट और रेट ऑफ चेंज ऑफ LOS में डिफरेंस क्या है? LOS रेट मतलब आपका एंगुलर रेट ऑफ चेंज क्या है वो LOS रेट है. और रेट ऑफ सेपरेशन मतलब ये जो आपका LOS का लाइन दिख रहा है R का, वो R कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर सेपरेशन. मतलब LOS रेट या LOS रेट मतलब एंगुलर जो सेपरेशन है कितना एंगल, ये LOS का जो एंगल है कितना चेंज हो रहा है आपका टारगेट मैनूवर कर रहा है. तो ये दिया है उधर थीटा डॉट है. हाँ तो वो थीटा डॉट व्हाट चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हाँ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन LOS एंड रेफरेंस लाइन. सो थीटा डॉट इज नथिंग बट d थीटा बाय dt. हाँ d थीटा बाय dt. तो आपको ये पूरे लाइन को लिखा है, मतलब ये जो मुझे लाइन मिल रहा है ना वो लाइन को मुझे d थीटा बाय dt से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. अब लाइन का इक्वेशन मुझे मिल गया यहाँ से, ये आपका लाइन का इक्वेशन था vt कोस बीटा माइनस थीटा माइनस vm कोस अल्फा माइनस थीटा. इसको मैं यहाँ पे जो आपका एंगल है थीटा, वो एंगल को मैं डिफरेंशिएट करूंगा टाइम से, तब ये इक्वेशन मुझे मिलेगा. बीटा तो कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है. वी आर एज्यूमिंग टू आर कांस्टेंट for the time being. This is for one particular time we are talking about. Once we get it, then by integrating the theta, beta, vm, vt, you will get the complete set of equations. But at the time we are talking about one particular time, so we need to find out the rate of separation. That will be theta dot. Clear now? Yeah. Fine. Now find out this LOS रेट डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके थीटा डॉट मिलेगा, वहाँ पे LOS रेट होगा. कितना मिल रहा है बताओ? 0.15. 0.15. क्या होगा उसका यूनिट? रेडियन पर सेकेंड. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डिग्री, so it will be डिग्री पर सेकेंड theta dot होगा. Then we need to find out the time to go. Time to go will become R divided by VC. Find out 15 divided by VC. That will become time to go. VC कितना मिलेगा आपको? 600 something. So 15 divided by 600 something will become time to go. बट यहाँ पे 15 किलोमीटर है और आपका जो क्लोजिंग वेलोसिटी वो मीटर पर सेकेंड में था. So you need to convert this kilometer into meters. It will 15,000 divided by 650 जो भी था. So it will become 15,000 divided by 650 is equal to time to go in second. Next what you need to find out is the angle alpha so that missile is on the collision course with the target. We need to find out the angle alpha to keep your missile
in the collision course with the target. For that, what is formula here? You need to put the LOS rate is equal to 0. What is your LOS rate? Theta dot. If you put theta dot means rate of change of angular angle or angular velocity is 0, then the alpha will become your required angle to keep your missile in the collision course. So in this equation, if you take this equation and equate it with respect to 0, so it is 1 by r Vt sine beta minus theta minus Vm sine alpha minus theta. Now we don't have the value of alpha. Okay, so this alpha is here. So We have alpha. no, it is in earlier question it was given. Now in E, that is your next part. We need to find out alpha so that your missile will be in the course of target. So here in this equation, that is theta dot, we need to equate theta dot equation with equal to 0. So if you take theta dot equal to 0, it will become 1 by r Vt sine beta minus theta minus Vm sine alpha minus theta. Beta is given, theta is given. So you can find out alpha because r will become 0. So it will become Vt sine beta is Vt sine 135 minus Vm sine alpha minus theta was 15 is equal to 0. By equating it to 0, you'll get the value of alpha. Find out कितना मिल रहा है. The missile is on target of course of collision if the rate of change of LOS is 0. That is the condition. So by applying this condition in this equation 2, we will get the value of alpha. In the previous numerical, it was given 60. Now we want to find out for given condition. Find out कितना मिल रहा है. Less than 60 आ रहा है या more than 60 आ रहा है. 45.94. कितना कितना है अल्फा? 47. 45.94. Okay, 45.94. और कोई आंसर? Now what is the next we need to find out is heading error. It is the error between the exact angle of missile at this time minus required angle. Exact angle is 60 minus required angle is 45 point something. So the difference between will become your heading error. So 60 minus 45 will become the heading error for the given condition. Clear? What we have first find out using the kinematic equation, we have find out derived the or we estimated the closing velocity, the rate of separation, LOS rate, time to go, and the required angle of missile for course of collision with the target and the heading error. Clear? Okay, so we'll take example of pure pursuit and we'll derive the complete set of equations in terms of your velocity and the acceleration using the kinematic equation. These are not the complete set of equations. These are the basic equations we derived from the geometry using trigonometry and the velocity vectors. As we know, this alpha, beta, theta, and Vt, Vm are not constant. We need to integrate with respect to time in the model of the equation to get the value. So I am inviting you for the next section, the remaining part of the lecture. Quickly join there. So we'll discuss the pure pursuit guidance equation as an example because that is the easiest method pursuit to derive the kinematic equations. Sir, Okay. So sir, yeah, sir, बोलो. आप हम लोग क्वेश्चंस दे रहे हो लेकिन उसके आंसर्स भी दे दो ना क्योंकि हम कुछ लिख नहीं रहे. इसलिए मैं आपको सोल्व करने के लिए बोला ना, जो आपने आंसर दिया 650 आया था क्लोजिंग वेलोसिटी, एलओएस आपको मिल गया, वो आप लिख के सॉल्यूशन लिख के रखो ना इसका. जैसे आपने हीट ट्रांसफर के लिए दिया था ना, हाँ, मतलब सॉल्व एग्जांपल, वैसे भी इसके लिए भी दे इसके दो. सोल्ड एग्जांपल नहीं है ना, प्रॉब्लम वो है, ये हीट ट्रांसफर नहीं है, इसके सोल्ड एग्जांपल नहीं मिलेंगे. तो अगर क्वेश्चन जैसे इजी रहेंगे तो ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे तो उसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम लोग क्लास में सोल्व किए वही उसी टाइम पे क्वेश्चन आएंगे ना, कॉम्प्लिकेटेड क्यों आएंगे फिर. ठीक है ना. जो हम क्लास में सर, करे उसी के बेस पे आएगा, तो परेशान मत हो. सर वो हम लोग को बाकी प्रोफेसर क्वेश्चन बैंक देने वाले, तो आप भी देने वाले हो ना कौन एग्जाम के लिए? हाँ क्वेश्चन बैंक. हाँ मैं दे एग्जाम के लिए, क्योंकि हाँ, मैं भी प्रॉब्लम होगा ना, दोनों के लिए दे दो सर.
मैं भी दे दूंगा, हीट ट्रांसफर का है मेरे पास और यूनिट्स वाइज दे हाँ। दूंगा। और ऐसे भी आपका Okay, sir. असाइनमेंट के क्वेश्चन है तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा, लेकिन मैं देने वाला हूँ, मेरे क्वेश्चन में तो कोई इशू नहीं आएगा। Okay, sir. कोई सब्जेक्ट का आ गया क्वेश्चन में या बाकी है सबका? नहीं, वो बोले नेक्स्ट वीक तक, मतलब ये वीक तक ये देंगे। ठीक है, मैं भी दे दूंगा। ओके, वो नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर लो, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ।